गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Myself, Dr. Ritu Agarwal, co-founder of the Healing Hands from Guwahati, Assam. We welcome you to our platform, the Healing Hands, the fourth edition of Mind Power, sixth day. The Healing Hand is an organization working from last 25 years in the field of training various healing modalities to cure body, mind, and soul. Our main mission is to create a happy and a healthy world. Also to let the people know about their potentialities and reality of life. So we have organized this platform to spread the awareness about various types of healing modalities. And so in this platform, we are letting the world to know about the mind power, what it is, how you can help with this mind power. So I welcome in this field Yogesh Verma from Lucknow, who is an international NLP trainer and a transformational coach. He is a certified clinical hypnotherapist, also a CEO of Thrive Me. Yogeshi, I welcome you to share your feelings and the words of state of mind today. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम ऋतु जी। और जो जनता, जो सब लोग हीलिंग एंड से जुड़े हुए हैं वो देख रहे हैं, और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और मैं योगेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। So who am I? I am Yogesh Verma. I help people to achieve focus and objectives to break through the limitations, and I help them to acquire impeccable skills to inspire and empower themselves as well as others. So this is what I do. I'm trained with the co-creator of NLP, that is John Grinder, Carmen Bostic, and Michael Carroll, who are co-developers of New Code NLP. So since 10 years, I'm practicing neuro-linguistic programming. I'm training and coaching people since 2014. So it's a long time training with the co-creators of NLP, New Code NLP, and then there are a lot of mentors and their gurus whom I'm trained with them. So I will be sharing a lot of skills. Of course, the topic is about the state of mind, and I will take you to different tools and techniques that you can implement in your life, and you can achieve resourcefulness or break through your limitations, what you are doing right now. So let us start the session about the state of mind. For a easiness, I will be playing some of the slides, but I want you to experience the coaching methods or the training methods of based on neuro-linguistic programming. So I will be giving a lot of tools and techniques in between. Those who are joining us live, they can experience the power of neuro-linguistic programming right now as you are listening to my voice. So let me open the presentation for you so that you can connect with my slides on your screen now. So this is about the state of mind. Yes. So because I'm starting from the beginning, how state is formed, what is the role of state. So let us go into the deeper part of a state and what is a state. Before that, let me take you to the conscious and unconscious mind, because without that, it will be incomplete to state the state of mind. So this is about the conscious and unconscious mind. If you think of a balloon and fill the balloon with the air, the soft, gentle third is like a P shape, is like conscious mind. And the whole surface of the balloon, which is filled with air, the big size portion that is filled with air is unconscious mind. So the function of conscious and unconscious, I can take in the brief sense. It's like unconscious is 7 plus minus 2 chunks. The function of is
Conscious mind is linear, it's very sequential, logical process. It is based on outcome, limited focus, and aware of now. For example, right now you can see the color of my jacket, and you can hear my voice, and where you are sitting or maybe standing, you can feel the touch of the floor or the touch of your chair. That's feeling right now, seeing right now, hearing right now. So this is the function of conscious mind. Now, what unconscious does? What unconscious is doing right now? You are watching this webinar, but millions of trillions of operations are happening in your body at unconscious level, at autopilot level. So unconscious mind is like the whole experience that is you are forming right now. The operations are very simultaneous as compared to the linear functions of conscious mind. It dependent on the involuntary movements or involuntary functions. As you are watching this webinar, you are unaware about how many times you are blinking your eyes, right? And how many times I'm raising my hand, how many times I'm changing my cues of my eyes. I'm unaware. So unconscious is all about the involuntary movements. It's all about the involuntary sensations that your body is giving to you. Now, we will be focusing on the generative behaviors. So that's what my quest was there. Like when I started my journey in this field, what is the power of the unconscious? So, where I'm taking to you is the power of unconscious is there. It's about the generative behavior. You can generate resourceful behavior, constructive behaviors for yourself. That's why, with the help of those resources, that means you can opt or you can break through your limitations. So unconscious holds all the resources, and unconscious holds all or stores all memories. So that's the function of conscious and unconscious. Now this slide represents some neurological pocket. Now very metaphorically, Freud said unconscious is the dark side of the mind where all resources are there. So I'm taking that figure only, and I want you to show that what is there in the dark side, that is what is there inside the unconscious mind. So they are resources and they are knots. And now what are these knots? Knots are like glitches actually. In our unconscious mind, they are glitches. If you will ask me glitches from what, glitches are like you can take from their past experiences. So I have shown them as knots or glitches which represent neurological pockets of behavior that you like to change, or that can you say like issues coming from the past. There is opportunity waiting for you to break through the breakthrough. So also there are neurological pockets bigger than knots. Again, these are also knots but bigger than the glitches. And these are represented as resources. So here on your screen, you can see there are knots, neurological pockets stimulating unresourceful behaviors, where resources are stimulating constructive behaviors. Now there I can say these bigger knots. Yes, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हिंदी में भी सुनना चाहते हैं, तो आप दोनों लैंग्वेज में अगर कंफर्टेबल फील करते हैं तो sure. मिक्स मैच कर सकते Sure, I will include Hindi. Of course, technical terms में जो है इंग्लिश में यूज करूंगा, बट द थ्योरी विल बी इन हिंदी. मैं हिंदी का प्रयोग भी करता हूँ. सो नाउ देर बहुत सारे बिगर नॉट्स हैं, और वहाँ पे बिगर नॉट्स का काम है कि वो इन जो ग्लिचेस है उनको मैप कर पाए. आई विल कम इनटू दैट पार्ट व्हाट इज मैपिंग. बट एनएलपी का सिर्फ एक मकसद है. एनएलपी इज अबाउट टीचिंग पीपल टू हैव रैपो विद देयर अनकॉन्शियस माइंड. वो रैपो अपने अनकॉन्शियस माइंड से कैसे बनाई जाए, सो दैट इट इज सेम वे. थिंक अप, मैं इस रूम में बैठा हूँ या आप जहां जहां ये वेबिनार कर रहे हैं उस रूम में बैठे हुए हैं, बट सडनली आपको पता लगता है कि देयर इज अ बेसमेंट inside the your room, and then just open the door of that basement, but it is extremely dark. बहुत घना अंधेरा है जिससे आप उसके अंदर कुछ भी नहीं देख सकते. सो अगर आप नहीं देख सकते तो पहला कदम क्या होगा, अगर आप उसमें चाहते हैं कि मैं देख पाऊं कि उस रूम में है क्या है, उस बेसमेंट के अंदर है क्या है,
So what you will do, so this the same question मैं अपने प्रोग्राम्स में भी यही पूछता हूँ, what people can do जब वो इस सिचुएशन में हो कि उनके रूम के अंदर एक बड़ा बेसमेंट है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. So पहली चीज वो बोलते हैं, okay, they will look for the light. कुछ लोग बोलते हैं they look for the switch, they look for the light, they look for the bulb, right? And or some may say that look for the torch. सो हेयर ऑल्सो रेपो का काम सिर्फ इतना है कि अनकॉन्शियस माइंड से वो टॉर्च जो है, एक बीम ऑफ लाइट दिखाई जाए, सो दैट यू कैन शाइन द टॉर्च ऑफ द बीम ऑफ अ लाइट इन अ स्पेस ऑन टू द रिसोर्सेज. जब वो बल्ब और बीम ऑफ लाइट आप देखते हो तो इनसाइड द अनकॉन्शियस इट इज फुल ऑफ रिसोर्सेज, एंड हेंस यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन टू द रिसोर्सेज. और जब हमें पता होता है कि वो रिसोर्सेज कौन सी हैं, तो हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना शुरू कर सकते हैं. आई एम क्रिएटिंग अ सस्पेंस. मैं थोड़ा सा सस्पेंस रख रहा हूँ क्योंकि एक छोटे छोटे स्निपेट्स में ये वेबिनार होगा. एक स्निपेट्स खुलेगा तो दूसरे का रास्ता आपको लगेगा कि एक से ही होके दूसरे पे गुजरता है. तो अभी सिर्फ ये मेटाफर समझिए कि इट्स अ बेसमेंट, इट्स अ रूम, और वहां मकसद है टॉर्च दिखाना. तो टॉर्च दिखाना जो है वो इस तरीके से होता है, एंड हेंस दैट इज व्हाट आई एम मेकिंग द रिसोर्सेज काउंटेबल, आई एम मेकिंग यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज. और मेरा सिर्फ एक काम है कि जो रिसोर्सेज है वो नोट्स के ऊपर हम मैपिंग कर दें. So NLP is like increasing the rapport between the conscious and unconscious mind. So जैसे ही NLP की सारी tools and techniques जो हैं, वही यहीं से पहला द्वार शुरू होता है, यहीं से पहला स्निपेट चालू हो रहा है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में समन्वय कैसे बनाए, ओके, कॉन्ग्रुएंसी कैसे क्रिएट करें, अलाइनमेंट कैसे होगा. और रेपो का मतलब है अनकॉन्शियस रेस्पॉन्सिवनेस. Okay, so how to create that rapport with the unconscious mind in a way that you are connected with the resources. किस तरीके से रेपो बनाए कि हम अपने अनकॉन्शियस की रिसोर्सेज को कनेक्ट कर पाए और इन नॉट्स और ग्लिचेस को ओवरकम कर पाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड. अब मैपिंग जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट्स लाइक मैपिंग, देयर आर टू थिंग्स, नॉट एंड रिसोर्सेज. सो हमें रिसोर्सेज नॉट के ऊपर मैप करना है. सो मैपिंग एक टर्म होता है एनएलपी में जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं कि एक के फीचर दूसरे के फीचर में मैप कर देना, यानी कि ट्रांसफर कर देना, एक की स्ट्रेटजी दूसरे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देना, राइट? ऐसी एक स्टेट को दूसरे के ऊपर मैप कर देना. सो एनएलपी में मैपिंग अक्रॉस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फीचर्स or from one strategy to another strategy, one state to another strategy. This is the utilization of mapping. जहां पे अभी जो बात हो रही है स्टेट की, हम उसमें यूटिलाइज करने वाले हैं कि एक एक्सपीरियंस के ऊपर दूसरे एक्सपीरियंस के ऊपर कैसे मैप करा जाए. तो इट इज समथिंग लाइक कंजक्शन विद अ कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, यानी कि दुख और सुख वाली बात मैं कह रहा हूं. बट इन एनएलपी इट इज, वी डोंट टेक इट इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव. Everything is a feedback. Rather I will be using resourceful unresourceful, right? ना पॉजिटिव नेगेटिव सुख दुख ये ना कह के समथिंग विच इज वेरी रिसोर्सफुल. यट मैंने अभी रिसोर्सेज बताई नहीं है आपको कि रिसोर्सेज क्या है. आपका दिमाग, मैं चाहता हूं कि अपना आप समझे कि वो रिसोर्सेज क्या हो सकती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल रिसोर्सेज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट external resources like man, machine, material, okay, equipment. No, I'm talking about the internal resources. सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम अपनाएंगे वो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा, और वो मैपिंग के ऊपर ही आधारित है. ये टेक्निक जब हम मैपिंग करेंगे यू विल कम टू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट राइट नाउ जस्ट कीप इन माइंड आई एम यूजिंग द मैपिंग. दैट मीन्स कुछ फीचर एक दूसरे जो कॉन्ट्रास्टिव एक्सपीरियंस है, कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ट्रांसफर करना और एक स्ट्रेटजी को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इंप्लीमेंट करना, ये मैपिंग कहते हैं. अब इससे जाने से पहले हमें समझना होगा कि हमारा सिस्टम ऑपरेट कैसे करता है, यानी कि दैट्स व्हाट वी कॉल इन एनएलपी हाउ वी नो व्हाट वी नो. ये सिस्टम जो चल रहा है आ रहा है वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे सेंसेस का एक मैं आपको चीज बताऊंगा कैसे सेंसेस का बहुत बड़ा रोल है.
So each one of us lives in a very different reality based on the filtering system. ये हमारे filtering जो system है ना, वो unconsciously हम develop करते हैं, और वही filtering system हम establish करते हैं बचपन से, और आज हम जब वो life को जी रहे हैं, that makes you the sense of the world. Okay, so in any given moment, extraordinary amount of data is being absorbed through the senses. वो external event से, right now this webinar is happening, I'm doing webinar, tremendous amount of data is coming to me also through the eyes, ears, right? What I'm feeling, maybe the taste and smell. In similar way, what you are doing in particular moment of time, एक बहुत जबरदस्त अमाउंट का डाटा आपके 5 सेंसेस के थ्रू एब्सॉर्ब होता है। अब इसमें बहुत ही एक मैं कहूंगा कि गूढ़ विषय है कि इसमें बहुत सारे फिल्टर सिस्टम होते हैं, तो मैं उनको अभी साइड में रखता हूं। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, और आपके सेंसेस, यानी कि आपको पता है अगर आपकी आंखें हैं तो वो 4000 से 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग की ही जो फोटोन्स हैं उनको देख पाते हैं, उससे पहले और उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके ऊपर नहीं देख पाते हैं। ओके, सो जब वो ट्रांसफॉर्मेशन अकर होता है और आपके सेंसरी रिसेप्टर्स और कॉर्टेक्स के बीच में एक रिप्रेजेंटेशन बनता है, इन हिंदी आई कॉल इट पहला मानसिक चित्र। ओके, इन इंग्लिश वी कॉल इट फर्स्ट एक्सेस। तो फर्स्ट एक्सेस यानी कि पहला मानसिक चित्र VAKOG के फॉर्म में होता है। राइट नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन VAKOG, इट्स अबाउट सीइंग, देखना, ऑडिटरी इज अबाउट सुनना, किनेस्थेटिक सारे आपकी फीलिंग्स है, टैक्टाइल टच है जो आप इस समय महसूस कर रहे हैं और टच कर सकते हैं, वो किनेस्थेटिक है। ऑल्फैक्टरी इज ऑल अबाउट स्मेलिंग एंड गस्थेटरी इज ऑल अबाउट टेस्ट। सो पहला मानसिक चित्र VAKOG के फॉर्म में बनता है। Okay, so if you take a look around your present environment right now, as this is my present environment where you are attending this seminar or right now watching this video, look around in your present environment. Everything that you are seeing, feeling, hearing, touching at this moment is an internal representation of outside world. Okay, so it's in the form of again seeing, feeling, hearing, touching, और ये रिप्रेजेंटेशन आउटसाइड वर्ल्ड का होता है जो हमारे अंदर बनता है। सो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत केपेबल है, इतना केपेबल है कि वो इतना एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डाटा जो कि 4 to 8 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड एक्सटर्नल वर्ल्ड से हमारी सेंसेस पे पहुंचता है, और उस अनॉर्मस, उस भारी डाटा को इंटरनल इमेजेस, साउंड और फीलिंग में तब्दील कर देता है। So pehla, right now you can see the color of the wall, you can see the portrait, you can see the frame, I can listen to the voice and coming from the background, and I can feel the touch of the chair, I can feel the touch of my table. That's all feelings. But जैसे ये डाटा अंदर जाता है वो अगेन एक दूसरे फॉर्म में तब्दील हो जाता है, which is in the form of PAKOG. सो दिस इज योर मैप ऑफ द वर्ल्ड। सो बार बार जब मैं मैपिंग की बात कर रहा था, पहले समझ तो ले मैप क्या है। सो दिस इज द मैप नाउ। पहला मानसिक चित्र जो आपका मैप ऑफ द वर्ल्ड क्रिएट होता है वो न्यूरोलॉजिकल फिल्टर्स के थ्रू क्रिएट होता है, और पार्टली बाय द फिल्टर्स यू हैव क्रिएटेड थ्रू द लाइफ एक्सपीरियंसेस। जैसे एक फेवरेट रेस्टोरेंट में जाते हैं, और बार बार क्यों जाते हैं? सो पहली बार उस रेस्टोरेंट में गए, आपने वहाँ का एम्बियंस जो है फील किया, चीजों को देखा, राइट, एंड डिशेस को टेस्ट किया, अरोमा स्मेल किया, और उसके बाद बहुत सारे हो सकता है वहाँ गजल गाई जाती हो, वहाँ का म्यूजिक बहुत अच्छा है। नाउ दिस इज यू आर फॉर्मिंग अ मैप। अगेन यू गोइंग बैक टू द रेस्टोरेंट, based on the first experience you are creating another experience. So ये जो मैप ऑफ द वर्ल्ड है वो न्यूरोलॉजिकल फिल्टर्स के थ्रू बनता ही है partly, और partly you have created through the life experiences. Again and again you are doing lot of experiments and experience create हो रहे हैं। अब जैसे ही मैं बोलता हूँ your favorite restaurant, what comes to your mind? So मैंने जैसे ही बोला योर फेवरेट रेस्टोरेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपके दिमाग में क्या आता है। सो क्या आपके दिमाग में उस फेवरेट रेस्टोरेंट की पिक्चर आती है, या कोई साउंड सुनाई देता है, या
कोई फीलिंग आती है, या वहाँ का कोजीनेस या कंफर्टेबल रहे थे आप, वो फीलिंग आती है, या उस डिश जो आपकी फेवरेट डिश बन चुकी है, जहाँ आप बार बार उस रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस डिश को ऑर्डर करते हैं और खाते हैं, उसका अरोमा या टेस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही मैं बोलता हूँ योर फेवरेट रेस्टोरेंट, अगर पहली मेमोरी जो कॉन्शियस माइंड पे आती है, दैट इज फीड फॉरवर्ड और फीड बैकवर्ड मैकेनिज्म चलता रहता है। सो जैसे ही वो मेमोरी आती है, you can see a picture, or you can see taste, you can see you can smell uh, an aroma, fragrance, or you can taste your favorite dish. नेक्स्ट इज पेट्रोल। जैसे ही मैं बोलता हूँ पेट्रोल, तो सबसे पहले व्हाट कम्स टू योर माइंड? इज इट अ विजुअल, इज इट ऑडिटरी साउंड, इज इट टच, और इज इट अ फीलिंग, इज इट अ स्मेल, और इज इट समथिंग कनेक्टेड विद टेस्ट? सो जैसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मैं दोनों मैकेनिज्म पे चाह रहा हूँ, एक अंदर जाने वाला और एक बाहर जाने वाला, दोनों की बात कर रहा हूँ, बिकॉज नेक्स्ट जो कड़ी आने वाली है आपको समझ में आएगा कि ये मैप किससे कनेक्टेड है। सेम पे अगर मैं आपसे बोलता कि लुक अराउंड द रूम वेयर यू अटेंडिंग दिस सेमिनार वेबिनार एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ इट, व्हाट यू सी फील एंड हेयर। सो देखो कि क्या दिख रहा है आपके एनवायरनमेंट में, सुनो क्या क्या सुनाई दे रहा है, और फील करो, या सारे टच या टेक्टाइल थिंग्स जो भी है उनको फील करो, या अगर टेस्ट और स्मेल है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो व्हाट लैंग्वेज यू विल यूटिलाइज नाउ? और जैसे ही हम लैंग्वेज का यूटिलाइज करते हैं, एक एडिशनल एक्स्ट्रा फिल्टर लगता है जो कि जिसे हम लिंग्विस्टिक फिल्टर बोलते हैं, तो हमारी लैंग्वेज भी फिल्टर का काम करती है, और हम एक और फिल्टर लगाते हैं और अपनी लैंग्वेज यानी कि हमारे सेंसरी मैप जो कि VAQG के फॉर्म में होता है, और फिर हम बोलते हैं कि जो मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है वो XYZ रेस्टोरेंट है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ अपने डे को, और जितनी बार भी मैं गया हूँ वहां मैंने अपनी मनपसंद डिश को वैसे ही पाया है जैसा मैं खाना चाहता हूँ। सो क्लियरली यू आर डिस्क्राइबिंग द इवेंट और डिस्क्राइबिंग द कॉन्टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो कि रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आएगा। अभी क्लियरली हो गया कि मैं डिश खाने की बात कर रहा हूँ, और एंजॉय का मतलब फीलिंग की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने बोला था योर फेवरेट रेस्टोरेंट, एक अलग चीज हो सकती है, हो सकता है वो विजुअल आए पहले, फीलिंग आए, हो सकता है टेस्ट आए, हो सकता है स्मेल आए, बट जब मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक फिल्टर ऑलरेडी लग चुका है, एंड दैट इज द सेकेंड फिल्टर विच इज नोन एज लिंग्विस्टिक फिल्टर। जैसे चाय गर्म है, सो मेरा गर्म आपका गर्म बिल्कुल अलग हो सकता है। इट वेरीज ऑन अ मैप एक्चुअली, कि मेरे लिए वही चाय जो एक बार सर्व हुई है वो किसी के लिए गर्म है, और मेरे लिए वो चाय गर्म नहीं है, या कम गर्म है, या ठंडी है। सो सबके मैप के अनुसार वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो सबके एक्सपीरियंस अलग होते हैं। और इसी तरीके से वो एक जो गाना होता है, जब सोचिए कि हम कार में चलते हैं और आई प्ले द सॉन्ग, फॉर मी इट इज वेरी सूदिंग, फॉर द अदर पर्सन लाइक माय वाइफ इट कैन बी टू अनोइंग, बिकॉज जो साउंड का प्लेइंग का जो टोन है या जो पिच है वो या वॉल्यूम है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट? किसी के लिए वो अच्छा हो सकता है। एग्जाम्पल हॉन्किंग। सो हॉन्किंग किसी के लिए तकलीफ दे हो सकता है, और हॉन्किंग किसी के लिए बर्दाश्त कर सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई हैड सीन, आई हैड फिगर्ड इट आउट मेनी ऑफ द केसेस इन द चाइल्डहुड, जहाँ पे काउंसलर को रिकमेंड कर दिया टीचर्स ने, एंड दे सेड के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है एंड द चाइल्ड इज फेसिंग सम चैलेंज, but later on we figured it out, the child is an auditory personality, very high auditory representation, तो जब वो साउंड आते हैं तो उसको चुपते हैं, ये तकलीफ देते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं होता कि एक क्लास में 10 बच्चे जब एक साथ बोलते हैं तो उसको कितनी तकलीफ महसूस होती होगी। ओके, सो रिप्रेजेंटेशंस सबके अलग है, और इसलिए मैं 3 रिप्रेजेंटेशंस जो मेन रिप्रेजेंटेशंस हैं उनको अब सामने ला रहा हूँ, जो आप जान गए, विजुअल, ऑडिटरी, किनेस्थेटिक, सीइंग, हियरिंग एंड फीलिंग। जैसे मैंने आपको बोला योर फेवरेट रेस्टोरेंट, व्हेन आई आस्क यू टू थिंक अबाउट योर रेस्टोरेंट, व्हाट हैपेंड? So, did you see the images? Did you hear the sound, or did you feel the
the coziness, or you feeling there any feeling that you felt, or any smell or taste. Again, smell or taste comes in the kinesthetic part majorly. And when I ask you to share about goals, तो आप सोचिए कि कोई भी गोल, आपका लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, अगर बहुत मुश्किल हो रहा है सोचना कि आपका गोल क्या है, लॉन्ग टर्म गोल और शॉर्ट टर्म गोल, बस मैं आपको ये याद दिला रहा हूँ कि बस थिंक अबाउट योर गोल्स। ओके, अगर वो नहीं आ रहा है दिमाग में, तो एक छोटा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं कि इस वीकेंड आप क्या कर रहे हैं, या पूरा हफ्ता है अभी फेस्टिव सीजन का, व्हाट यू विल बी डूइंग। सो व्हेन आई आस्क यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस, व्हाट कम्स टू योर माइंड। सो कोई कह सकता है कि मार्केट में चकाचौंध है, एंड द लाइट्स आर ब्राइट, एंड आई कैन सी इट्स अ सीजन ऑफ फेस्टिविटी। नाउ check it out how I am expressing in the language. Again, what I am seeing when I'm recalling that experience is completely different from what I am saying to you, because अपने दिमाग में जैसे मैं कल का इवेंट जब मार्केट गया था और मैं सोचता हूँ, तो it is coming into my mind there crowd. Okay, there's a crowd in the market, people are talking. Okay, people are listening to each other, they are chit chatting, they are doing right. So but when I'm expressing, it is something in a different mode. That is, I use the word like I can see, मैं देख पा रहा हूँ चकाचौंध. So the representation is completely different. So चीजें जैसी होती हैं, वो रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अलग अलग होते हैं हम सबके. नंबर वन, मैप क्या है ये आपको समझ में आया. अगेन, मैप इज इन द फॉर्म ऑफ VAQG. और आगे जब हम जा रहे हैं, तो स्टेट की बात करेंगे. अभी जब बात करते हैं हम लोग स्टेट की, क्योंकि अभी मैंने 2 चैप्टर क्लोज किए. 2 चैप्टर क्लोज करने का मतलब है, फर्स्ट इज अबाउट द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड, और सेकंड एपिसोड जो हुआ, और आई कैन से द सब एपिसोड, उसमें मैंने आपसे शेयर किया मैप के बारे में, मैंने रिप्रेजेंटेशंस के बारे में बात की. ओके, अब नाउ जस्ट सी दिस चार्ट, or you see this diagram. This is actually communication model in NLP. In technical term, it is called epistemology, how we know what we know. So I'm summarizing it now. So external event means, जैसे मैं यहाँ पे आप वेबिनार को कर रहा हूँ, so I can see, I can feel, I can hear, taste, smell. External event हो रहा है, और external word से 4 to 8 million bits of information पर सेकेंड आ रही है. जैसे ही कॉर्टिकल प्रोजेक्शन से वो इमेजेस अंदर गई, सेम with ears, drums, and feelings, sensations, nostrils, and taste buds. There are filters applying on that. After the first filter, you are forming a first access, और फर्स्ट एक्सेस के बाद सेकंड फिल्टर लगते हैं, जो लिंग्विस्टिक फिल्टर्स होते हैं, लैंग्वेज. और उसके जो आप फिल्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, हम कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, और कुछ इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन इतना स्पेस ले नहीं पाता, इतनी स्टोरेज उसके पास है नहीं है. एंड हेंस अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, वी डिलीट समथिंग, वी डिस्टॉर्ट समथिंग, वी जनरलाइज समथिंग. And of course, there is a role of your beliefs, there is a role of meta programs, there is a role of memories, there is a role of your attitude, decisions, and your language. ये पूरा एक फिल्टर्स का समा है, और इस यही आपकी लाइफ को चला रहे हैं, यही आपकी लाइफ को बना रहे हैं, और यही आपकी लाइफ को लिमिट करेंगे. So in NLP, this is how we not only read the people minds, and but how we coach people. बिकॉज अगर हमने ये चीज समझ ली, तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा किसी क्लाइंट का चैलेंज को समझना और उसको ब्रेक थ्रू दिलवाना. सो दैट्स व्हाई हाउ एज अ कोच, as an international trainer, I am focusing on these part filters that we do teach in our training programs. Now, as I was talking to you, after this filter, internal representations form हो गए, IR कह सकते हैं, based on the map. तो मैं पूछता हूँ कि what is your shopping strategy? कैसे आप शॉपिंग करते हैं? सो आपकी शॉपिंग का स्ट्रेटजी क्या है? सो क्या देख के कलर पसंद करते हैं और हो गया, या आपको कपड़े का फील बहुत इंपॉर्टेंट है? जब तक उसको आप ट्रायल नहीं करते, उसका फील आपकी बॉडी पे आना चाहिए, वो टच इंपॉर्टेंट है, राइट? वो इंपॉर्टेंट है, या कुछ और इंपॉर्टेंट है? समटाइम्स स्मेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट.
Okay, so people have capabilities of smelling, and then they choose cloth according to the smell also. There are many people I had seen. You will be like amazed to hear this data कि कैसे लोग smell के base पे decide करते होंगे उन्हें क्या खाना है क्या पीना है. But people are there. Think about people like autistic uh, kids. There are many autistic kids who smell first and then they decide what to choose, what not to choose. Okay, even their perceptions are based on smells. So बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं. Even I have something which is peculiar, that I most of my representation are based on the smell. Okay, so that's what my mind has a power, that is, you can say, a gift. I can smell the state also. So that's what many people will say कि ये कैपेबिलिटी तो शायद डॉग्स में है कि वो स्टेट को स्मेल कर लेते हैं, घर में कैसा स्टेट होने वाला है, और उसके स्मेल के बेस पे दे गिव इंडिकेशन to the family member. Sometimes they drift the state also through their capabilities. That's the quality of senses. So internal representations जो मैंने दोनों बताया कि आप express करते हैं as a language, that is something different. But when I ask you about your favorite restaurant, what came first? What was the representation? पहले image आई, उसके बाद feeling आई, या उसके बाद sound सुनाई दिए. It's a strategy. But representation is again in the form of VAQG. Petrol, what comes first? एक वर्ड किसी ने वेबिनार में मुझे दिया था. आई डिडंट नो अबाउट दैट वर्ड. दैट वाज ब्रह्म भोज. So eastern side of UP, they use this word Brahm Bhoj. So those who are aware about the word Brahm Bhoj, सोचिए कि जैसे ही आप Brahm Bhoj अपने आप से बोलते हैं, या मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस से Brahm Bhoj. So what comes to your mind? Did you see the image? Did you feel something? Did you hear the voices sound? Or is it about the taste or smell? And when you will express it, how you are expressing it, that's an internal representation. Now based on that IR, you will create a state. So state is an ongoing emotional, mental and physical experience इस समय पे, that's called state. Ongoing emotional, mental, physical experience is called state. यानी कि state is our way of being at this moment. It comes from thinking, physiology and emotions. इसलिए यहाँ पे state connected है physiology से. और यहीं पे बहुत बड़े tools मैं आपको दूंगा कि how you will work on your physiology. And physiology means body actually. Physiology is a scientific term and it's same as body. So क्या physiology में change करें हम लोग कि you can change your state. So let me share a story with you. और ये एक real story है मेरे client की. So a lady was doing a practitioner course with me, and you know this, since 6 months all courses are going online. So the child was very curious. So उनका बेटा जो बहुत curious हो रहा था कि NLP है क्या actually. Mom is so busy since a month time कि ये NLP में करते क्या है, what is NLP. So the teenager child was very inquisitive about NLP, and he asked mom, what is NLP. So मॉम ने बोला ओके ठीक है, चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ, पहले जाओ और दादू से पूछ के आओ कि क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, तो हाउ इज ही फीलिंग, बिकॉज ही इज सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, ही इज हैविंग अर्थराइटिस सिंस लॉन्ग टाइम. सो जस्ट जाओ और उनके हाल पूछ के आओ बस. सो बच्चा जाता है और पूछता है दादू दादू आप कैसे हो, आज कैसा फील कर रहे हो. सो दादू जैसे ही उसने पूछा, द टोन चेंज, बहुत दर्द होता है इस वक्त, अब उम्र ही ऐसी हो गई है और कुछ कह नहीं सकते बेटा, अब तो ठंड आ रही है और मुझे पता है कि अब बहुत ज्यादा दर्द बढ़ने वाला है. अब पहले जैसा चलना तो नहीं होता, नहीं था, उंगलियां कड़कड़ा रही हैं, दर्द हो रहा है, बस अब यही है कि अब ये दर्द सह लूं बस. एंड समथिंग हैपेंड, द चाइल्ड केम बैक. ये सुन के वापस आया और बोला वो तो हो गया, पहले बताओ व्हाट इज एनएलपी नाउ. तो बोला दादू ने क्या बोला है, बोला ही हैड गिवन मी समथिंग कमांड्स के दर्द हो रहा है, बहुत पेन में थे और बहुत परेशान थे और ये सब हो रहा है उनके साथ में.
तो मैं बहुत जल्दी, मतलब मुझे देखा नहीं गया, मैं आ गया। फिर उन्होंने बोला ओके चलो फिर से जाओ और उनसे पूछो कि दादू व्हाट वाज द, और जस्ट आस्क अबाउट के व्हेन यू यूज्ड टू प्ले इन द चाइल्डहुड व्हाट थिंग्स यू यूज्ड टू एंजॉय मोस्ट। ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आप बचपन में शैतानियां करते थे और बहुत एंजॉय करते थे, गो एंड आस्क। बच्चा जाता है और क्योंकि वो उसी का फोटो होता है, शैतानी का मोड में होता है, तो बोलता है दादू दादू ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया था। आप भी बचपन में बहुत शैतानियां करते थे क्या? तो कुछ बताइए ना कि कैसे, क्या क्या खेलते थे आप। समथिंग चेंज ड्रेस्टिकली नाउ। द पर्सन हु वाज टॉकिंग इन a very crying pity mode has shifted into a tone like this. You know, जब हम बचपन में खेलते थे तब तो पूरी सीमाएं पार कर देते थे। गर्मी में बताए क्या करते थे हम लोग, पूरे दिन भर तो हम लोग है ना आम के बाग में रहते थे। और मैं और मेरे दोस्त है ना बाउंड्री कूद के आम के बाग में जाते थे। और मैं बाहर कभी कभी तो डैन वाइज होता था क्या, गांव बाउंड्री के बाहर कौन बैठेगा, अगर माली आ गया तो मैं सीटी मारता था। और कभी मौका मिलता था तो फिर मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के आम फेंका करता था। और तीसरी बार हम जब डैन होती थी तो मैं आम कैच किया करता था। और फिर उसके बाद तो खूब आम खाते थे, खूब सोते थे, और फिर शाम को नदी के किनारे नहाते थे। पूरा दिन मजेदार बीतता था। एंड ये सुन के चाइल्ड फिर वापस आ गया, ऑल्दो ही एंजॉयड द स्टेट। और जो पहले 1 मिनट 2 मिनट उस दादू के पास था, इस बार 5-8 मिनट उनकी बातें सुनी और वापस आ गया। एंड देन मॉम सेड दिस इज एनएलपी। these states what in एनएलपी में से हम स्टेट बोलते हैं। सो अभी जो तुमने देखा सुना फील करा वो एक मनोस्थिति था। ओके, दैट्स कॉल्ड स्टेट। and that's called NLP also. What is NLP? This is NLP actually. Two states, two context, two contrastive analysis. This is what is NLP, or you can say the one part of NLP. So co-creators ने इतने सारे मॉडल्स बनाए। और जब भी मैं उनके साथ मुझे मौका मिलता था ट्रेनिंग के दौरान, तो हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि जिन्होंने एनएलपी को बनाया उनके थ्रू, उनकी आंखों से, उनके एक्सपीरियंसेस से हमने एनएलपी सीखा है। तो दैट्स व्हाट जॉन वर्क्स मोस्टली ऑन द स्टेट एक्चुअली। सो हमारा स्टेट जो है मोस्ट इमीडिएट पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस है। और स्टेट जो होता है वो इंटेंसिटी में वेरी कर सकता है, वो लेंथ में वेरी कर सकता है, फेमिलियरिटी में वेरी कर सकता है। Although we believe that states are caused by events outside our control, सभी ये लोग कहते हैं कि जो इवेंट्स बाहर होते हैं उससे हमारी मनोस्थिति गड़बड़ा जाती है, बट एक्चुअली वी क्रिएट आवरसेल्व्स। वो स्टेट हमारे अंदर ही है। यू कैन सी द चार्ट नाउ, जिसकी वजह से स्टेट जो है गड़बड़ा सकता है। तो जैसे लोग बोलते हैं गुड स्टेट, सो एज आई टोल्ड यू वी विल नॉट बी कम्युनिकेटिंग इन गुड और बैड स्टेट। आई विल बी टॉकिंग इन रिसोर्सफुल स्टेट। तो रिसोर्सफुल यानी कि रिसोर्सफुल स्टेट का मतलब है रिसोर्सेस क्या यूटिलाइज करनी है आपको। सो अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, और एक आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी चाइल्ड के लिए वो एग्जामिनेशन हो सकता है, किसी के लिए इंटरव्यू हो सकता है, किसी के लिए कुकिंग कंपटीशन हो सकता है, राइट? और किसी के लिए मीटिंग हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकता है, किसी के लिए सेल्स हो सकता है। तो उस स्टेट में, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा, आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो मैं जब एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो स्टूडेंट बोलते हैं कि मुझे इंटरेस्ट स्टेट चाहिए, एक्साइटमेंट चाहिए, मुझे फोकस स्टेट चाहिए, काम स्टेट होना चाहिए मेरे एग्जाम में। दीज आर रिसोर्सेज नाउ। ओके, सो एक अगर सेल्स प्रोफेशनल है, वो मुझे बोलता है कि मुझे फोकस चाहिए एंड आई वांट इन्फ्लुएंशियल स्टेट। सो दैट इज अ रिसोर्स फॉर अ सेल्स पर्सन। अगर कोई बोलता है प्रेजेंटेशन में क्या चाहिए, सो प्रेजेंटेशन में बोलता है कि इंटरेक्टिव, आई वांट टू बी इंटरेक्टिव, आई वांट टू बी इन इंटरेस्टिंग मोड, आई वांट टू बी इन क्यूरियस मोड। सो दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। अगर कोई बोलता है कि लर्निंग, लर्निंग में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर जो लोग कुछ भी टेक्नोलॉजी को, कुछ भी थ्योरी को, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट पे लर्निंग चाहते हैं, सो उनके लिए क्यूरियोसिटी एक रिसोर्स हो सकता है।
ओके उनके लिए इंटरेस्ट एक रिसोर्स हो सकता है, किसी के लिए एक्साइटमेंट रिसोर्स हो सकता है. वेर आई डू ट्रेनिंग, फन इज माई रिसोर्स. Okay, where I do training, focus is my resource, excitement is my resource. So अगर excitement नहीं है, fun नहीं है, तो training का मजे नहीं है, because otherwise मैं फिर job कर रहा होता. So that is what I enjoy in this part. I'm learning as well as I'm enjoying. I'm creating a fun for me as well as my participants. So these are now resources. And now connect with the first figure what I had given you about the resource. And let me give you a first figure on your screen also. So this is all I was talking about, resources. Okay, and the knots is same, you can compare with first context of that old man, where he was in very painful mode. While he was expressing, maybe he was feeling unresourceful at that time, right? So that you can say as a knot. Okay, feeling frustration, not feeling anxiety, not. Okay, anxiety is also a state, right? So koi kehta motivation, so motivation is also a state. It's an ongoing experience. Sometimes you feel so charged, you motivated कि आज तो बस ये सब हो जाएगा, सब कुछ possible हो जाएगा. You are so committed, so focused, doing great. Sometimes you are unmotivated. You are so unmotivated that you procrastinate. Okay, think about some situation now. So right now it's about the experiencing situation. So आपका दिमाग ऑलरेडी जो है some situations को ऑलरेडी समझना चाहिए कि कहाँ आप उस stuck स्टेट में है, कब अनरिसोर्सफुल स्टेट में है और कब रिसोर्सफुल स्टेट में है, क्योंकि यही स्टेट्स आपकी कैपेबिलिटीज को अफेक्ट करती हैं. And based on these states you will be forming your abilities or your what we call strategies. जैसे एक म्यूजिशियन है, वो अगर परफॉर्मेंस को रिहर्स करता है अकेले, कितनी बार उसने उस परफॉर्मेंस को रिहर्स किया है. Okay, and he is able to do it perfectly when he is alone. But now when someone is watching and the public is watching, he do not perform well, and this musician can have an anxiety. Maybe that can be a performance anxiety, and that performance anxiety can diminish the performance. So this situation is like we are full of these states. As I said, everything ongoing right now is called state. is आपकी मनोस्थिति यानी कि इमोशनल मेंटल फिजिकल एक्सपीरियंस, दैट इज कॉल्ड स्टेट. सो दो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस लेता हूं मैं आपसे और फिर आपको आगे ले चलूंगा. जो हमारा मेन पैटर्न है जहां पे हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, हाउ टू गेट रिसोर्सेज, how to overcome unresourcefulness or unresourceful state. So let me take two contrastive context. So first one is unresourceful. So मैं जागता हूँ और सुबह जागा और it's raining and in northern part of our like country, when it rains since so many years, it is humid also. और ये ह्यूमिडिटी होते ही समथिंग इन माय बॉडी इज फीलिंग लाइक it's a troublesome for me to feel that humidity. एंड आज टुडे मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है. इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी बॉस के साथ और एक दूसरी थर्ड पार्टी के साथ, जहाँ पे हमें कुछ डील उनको सुझानी और डील सेल करनी है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट राइट नाउ व्हेन आई सी इट्स रेनिंग एक्चुअली, एंड सडनली इट्स रेनिंग और मैं सोच रहा हूँ कि आज तो मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि समथिंग हैज ट्रिगर्ड एक्चुअली ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दैट वेदर. एंड यू आर गिविंग मीनिंग टू योर माइंड दैट दिस वेदर इज, आज तो मैं लेट हो जाऊंगा, बहुत ट्रैफिक होने वाला है, क्राउडेड होगा एनवायरमेंट, और ह्यूमिड तो वैसे ही एनवायरमेंट, तो दैट विल बी हॉरिबल. सो जैसे ही वो बाहर निकलता है, सडनली व्हाट ही विल बी फेसिंग, ही विल बी फेसिंग द ट्रैफिक. एंड ट्रैफिक जैसे ही उसको होता है, ही इज सीइंग एवरी लाइट एज अ रेड लाइट टुडे. सो जिस लाइट पे वो जाता था, अगर मे बी उसके घर से ऑफिस में 20 रेड लाइट्स ट्रैफिक लाइट्स हुआ करती थी, उसमें वो खट खट निकल जाता था. बट नाउ टुडे every light is the red light now. Okay, and right now when he is stuck at the traffic,
the voice of the boss is haunting कि अब वो लेट हो गया है, and then voice जो है बॉस की आने शुरू हो गई है अभी already. He is in the traffic, but the internal dialogues are running continuously in his mind. और जैसे ही पहुंचता है, बॉस कह देता है यू आर लेट, यू डोंट केयर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, you don't have care for anything, you are careless. Okay, so जैसे ही ये बोला और वॉइस जो टोन था बॉस का, something has changed again. सुबह से तो चेंज ही हो रहा था, now this has changed, this has gone to another level of unresourcefulness. This is creating an anxiety, frustration also, and he's playing in his mind what has happened actually since morning, and he started blaming himself के हो सकता है सुबह मैं लेट उठाऊं जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई, अब नाउ मेरा तो पूरा दिन है ना बेकार जाने वाला है. दिस इज हाउ पीपल गिव मैसेजेस टू देमसेल्फ. ओके, नाउ प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है, अर्जेंट टास्क था, दैट वाज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ द डे दैट गाय हैज टू परफॉर्म, और प्रेजेंटेशन भी गौर हो जाता है. द परफॉर्मेंस वाज नो, you can say it is not, instead of at the peak level, that guy has shattered his own performance. The deal was missed and the feedback given was uh, pretty negative, you can say. Now the second situation is a different situation, contrastive situation. This is something similar to that. It's raining. I wake up and then suddenly I saw rain. It's raining, so I should be uh, on. I should have to be ready before that time, because I know that is a proactiveness is in my mind. There will be huge traffic, but it's not giving me any worry or a sense of anxiety in me. But in on the road, my earlier time used to be 9, but right now I was on the verge of starting the journey 15 or 20 minutes before that. On spot, 15-20 minutes I was there before the office. But suddenly something happened and the boss said, this meeting has been shifted and I think you missed the message. This meeting is on the another location, you have to come there. Now this is, so what, okay, let it be. So if I will be late, it's okay, because I am changing my location. My state is calm. I know I have to go. I'm in traffic now. Light is still red. I'm in the traffic, but I am very calm. I'm pretty in resourceful state and waiting for the moment to come, because I want my focus on the meeting. My focus is now connect with that torch. When you are looking at the basement, what you are focusing? Are you focusing on the knots? Okay, or are you focusing on the resource? So this guy was focused on resources. Actually, what he want, actually he was so desperate, determined, committed, that uske dimag mein sirf wahi chal raha tha कि I want to be that same. When I will come or walk out from my office in the evening, I want myself to see a pat from my boss saying, "You cracked it." That was running in, and then meeting happened. It's more beautiful, and then he was very excited throughout the meeting, and they cracked the deal. So two contrastive analysis, same situations, but these two guys, one and two, they were different in their states actually. Okay, so right now where I am focusing, because these rain, okay, traffic lights, okay, voice of the voice, these are all stimulus actually, or you can say these are acting as a trigger where I am heading on to another part, and I will bring this chain of excellence there only. So these stimulus is creating a response. So in each experience, there are things you see, hear, feel, taste, and smell, and all these parts of the experiences are connected or anchored in your mind, like humidity, traffic lights, late, boss tone, and any other part of the experience that can be used to create the or recreate the state of the mind you were in that time. So here in this process, like there are a lot of stimulus, there are a lot of triggers like traffic lights. A picture can be a stimulus, a smile can be a trigger. Fashion, for example, I wear mostly black. 90% of my wardrobe
is of only white and black. I prefer wearing black jackets, black coat, okay, black trouser. So that's anchor for me. If you will see the speakers like Tory Robbins almost wear black. Robin Sharma, he almost wear black. Marshall Goldsmith wears the khaki pant and green t-shirt almost all the time. I had seen so many times in my sessions where I was doing session with them. So this is they are actually the fashion is also the clothes they wear also are visual anchors, or it can be the feeling. The cloth, if like I said, the smell is a touch. It's very important how you choose the cloth. But mostly for me, I choose the cloth on based on my visual appearance. So that's an anchor for me. Sunny days can be an anchor. Okay, and same way. What about the auditory? Your name, for example, Yogesh. So when someone says Yogesh, that's already anchored in my mind, right? So your name is also an anchor. Your voice, your mother's voice, or the tone of the voice is also anchor. Okay, same way music, maybe your favorite music, that's an anchor. Horning or like honking, again anchor. Doorbell is an anchor. Okay, there's a mystical experience happens when my child knows when she was 6, she was 5. Um, like maybe a bell rings, कितनी बार रिंग करती होगी दिन में? 20, 25, 30 बार, अगर हो सके तो कम से कम 4 या 5 बार. But every time when I ring the bell, और मे बी आपके साथ भी होता होगा कि पता होता है कि पापा आ गए. ओके, मे बी इट्स अ फैमिली मेंबर बिकॉज इट्स एन एंकर एक्चुअली. और आपको पता होता है कि ये हमारी मेड है, दिस इज दूध वाला आया है, जिस तरह से वो एंकर कर जाती है डोर बेल. ओके, सो फोन की रिंगटोन भी एंकर है, मैसेज की टोन भी एंकर है. व्हाट इज अ फीलिंग? फॉर एग्जांपल दिस चेयर, दिस इज एन एंकर. Okay, the touch of the jacket is an anchor. Smell of the tar on the road is an anchor. Smell while smoking is an anchor. Smell of a coffee is anchor for me actually. So smell of that coffee brew hoti hai jab coffee, so that is an anchor for me. Smell of perfume is an anchor for me. Okay, same every time I use the same fragrance perfume, so jab bhi wo fragrance use karta hu, it creates a state actually, it creates a mood, you can say. That's nothing but state. So in NLP, you will hear in the like people saying, maybe in the psychology background or the practitioners says that state management or state control is important. और हम बोलते हैं कि ऐसे शब्द कुछ नहीं होते हैं. जो लोग बोलते हैं स्टेट मैनेजमेंट और स्टेट कंट्रोल, वी से इन आर what I am trained with, these are flawed propositions. Okay, these are flawed. ऐसा मैनेज करना और कंट्रोल करना, ये सब मिथ्या है. इसे हिंदी में मैं ऐसे कह सकता हूँ, बिकॉज नोशन ऑफ कंट्रोल और मैनेजिंग वन स्टेट सब्सक्राइब्स टू डेस्कार्टेस माइंड डुअलिज्म प्रिंसिपल जो है या थ्योरी है, जो कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती आई है साइकेट्रिस्ट और मेडिकल प्रोफेशनल्स को ओवर द सेंचुरी, ओवर 3 centuries आई से, राइट. तो ये इस डुअलिज्म प्रिंसिपल पे आधारित है. रादर जब को क्रिएटर्स ने एनएलपी बनाया तो 1975 के आसपास प्री सपोजिशंस, ये भी एक बिलीफ की तरह काम करते हैं एनएलपी में, जहाँ पे एक बिलीफ आया, एक प्री सपोजिशंस आया जहाँ माइंड और बॉडी आर लिंक सिस्टम. सो ये प्री सपोजिशन आया था. अभी ये प्री सपोजिशन को चेंज कर दिया गया. इट्स द को क्रिएटर्स हैव चेंज. दे आर सेइंग नाउ माइंड एंड बॉडी आर द पार्ट ऑफ द सेम साइबरनेटिक स्ट्रक्चर. यानी कि वो एक ही सिस्टम का पार्ट है. दे आर नॉट लिंक बट दे आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम. सो राइट नाउ आई एम ब्रिंगिंग एंड आई वांट टू ब्रिंग योर फोकस ऑन दिस स्टेट ऑफ एक्सीलेंस. स्टेट मैनेजमेंट नहीं है, स्टेट कंट्रोल नहीं, स्टेट ऑफ एक्सीलेंस. rather than controlling it or managing it, say state choice. Okay, and again there is a presupposition, choice is better than no choice. तो याद है वो 2 स्टेट, रेनी डे, ये बंदा डील क्रैक नहीं कर पाया, स्टेट जो उसके साथ पूरा एंजाइटी, एंड दिस पर्सन वाज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, डिटरमिन्ड, कमिटेड, एंड ही क्रैक द डील. दोनों में फर्क क्या है? चॉइस.
स्टेट का चॉइस, हर समय चॉइस रहती है हमारे पास कि स्टेट की चॉइस आपको करनी है. रादर यू वांट टू dwell in that unresourcefulness, or there is a choice you can come out of that. So I am here to give you choices. Okay, that's what I use, and when I'm training people, I say it in, I'm giving you a choice, and that is your choice whether you will take it or not take it. So I'm talking about the state of excellence, from where this chain of excellence is coming. And when you are working at the level of state, you are working at significantly higher logical level than behavior. So पहले फिल्टर्स आए, फिल्टर्स के बाद में आपका मैप क्रिएट हुआ है, मैप के बाद इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट होता है, उसके बाद स्टेट क्रिएट होता है, और लास्ट में आता है बिहेवियर. दैट इज योर आउटकम. सो लॉजिकल लेवल पे स्टेट ऊपर आता है, हायर, और इट्स इज वर्किंग एट अ सिग्निफिकेंट हायर लॉजिकल लेवल एज कंपेयर टू बिहेवियर. That is what in NLP we deal with. We are dealing with state, we are dealing with internal presentation, and predominantly we are working on the filters. So NLP में हम हर एक level पे काम करते हैं. So here it is an opportunity for me that logically मैं ऊपर काम कर रहा हूँ higher logical level पे. So more choices for the client now. और ज़्यादा choices हैं. More the higher the logical level, more choices for the client. When I was doing a training with John Ginder at Sesimbra, Portugal, the entire training was focused on this chain of excellence. And John always used to say, the problem is never the problem. Okay, the problem is the state, the client or the person enter the context of the problem in. Okay, and यहाँ पे हमारा एक और presupposition आ जाता है कि there are no unresourceful people, there are only unresourceful states. यानी कि कोई भी unresourceful people नहीं होते हैं, और सिर्फ unresourceful states होते हैं. So when you have a state choice, you can access the resources. Okay, you can access the resources, and then that will help you to get breakthroughs. तो अभी देखिए कि कैसे ये कनेक्टेड है. सो द फर्स्ट लिंक, दीज आर ऑल लिंक एक्चुअली. ओके, देयर इज नो ऑर्डर लाइक दैट कि ऐसा है कि रेस्पिरेशन ऊपर है या नीचे, बट दीज आर लिंक्स एक्चुअली लाइक अ चेन. सो फर्स्ट पार्ट इज ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन connected with physiology, physiology connected with state and performance. इसका मतलब अगर अपना ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करेंगे, ओके, सो आपका फिजियोलॉजी शिफ्ट होगा, और अगर आपकी फिजियोलॉजी शिफ्ट होगी तो आपका स्टेट शिफ्ट हो जाएगा और परफॉर्मेंस शिफ्ट हो जाएगी. चलिए इसके लिए एक एक्सरसाइज करते हैं, देन यू विल एक्सपीरियंस के मैं क्या बोल रहा हूँ. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीधे बैठ जाइए. ओके, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कम टू योर नॉर्मल ब्रीदिंग. और जैसे ही नॉर्मल ब्रीदिंग पे आप आ जाएं, अपने हाथ को नीचे ले जाइए और अपने टोस को टच करना है इस तरीके से, और नीचे ही देख के टोस को देखिए और बोलिए, आई एम मोटिवेटेड, आई एम गुड. कीप ऑन सेइंग एंड आई एम गुड. I am motivated. I am motivated. I am good. ओके, अब वापस आ जाइए अपने सेम पोस्चर पे, एंड नाउ हैव अ ओपन पोस्चर एंड से, आई एम सैड, आई एम सैड, आई एम सैड. Okay, so sad. We can do this exercise with the audience live by putting the screen off for some time. ये audience के साथ आप live करवा दीजिए. Okay, how many people are connecting right now? Let me check it up. Give me a moment, please. Yes, okay. So those who are attending, you can drop me message on the chat box also. I am seeing the message also, and I can take up with questions also, queries also. In between, अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे, किसी सब टॉपिक पे आपको कुछ डाउट है, and you want to raise a question, you can raise the question. I will answer here in this 90 minutes only.
सो सिंपल सी बात है कि जब हम अपनी बॉडी, हम अपनी फिजियोलॉजी में शिफ्ट करते हैं, जब हम नीचे गए, सो दिस इज अ फिजियोलॉजी। अगर मैं बोल रहा हूँ मोटिवेटेड हूँ और आई एम गुड, मैं चाह के भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मोटिवेटेड हूँ या गुड हूँ। और जब मैं ऐसे बोलता हूँ आई एम सैड, तो मैं चाह के भी सैड नहीं हो पा रहा हूँ और फील नहीं कर पा रहा हूँ सैडनेस। दैट मीन्स फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हमारे स्टेट पे, राइट। सो जैसे ही फिजियोलॉजी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको समझ जाना चाहिए कि आपका स्टेट जो है बहुत प्रोमिनेंट रोल अदा करता है फिर वहां पर। और दिस इज व्हाट जॉन गिंडर ने एक स्टोरी हमको सुनाई थी, उनके रियल लाइफ की स्टोरी है। उनके क्लाइंट आते हैं और उनसे बोलते हैं कि आई वांट टू कम आउट ऑफ द डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन से मैं 7 साल में परेशान हो चुका हूँ, अब मैं इस डिप्रेशन से बाहर आना चाहता हूँ। तो जॉन बोलते हैं ठीक है, वो बिल्कुल फैंटेस्टिक हूँ, मैं फाइन हूँ। आपको क्या करना है कि जब भी आप मेरे ऑफिस पे आओगे, मेरे तो आपको क्या करना है, पैदल आना है। और पैदल आना है, और बीच में वो इंडस्ट्रियल एरिया था तो बहुत सारी चिमनीज थी, तो आपको चिमनीज काउंट करके आना है टोटल। सो आप चिमनीज काउंट कीजिए, और चिमनीज काउंट करके ही वापस भी जाना है। यू हैव टू come in by walk in, count the chimneys, and you have to go back and again count the chimneys. So उन्होंने बोला ठीक है, कितने दिन? बोला 30 days you have to do it. Okay, but you have to do it continuously. Every day you have to come and then you have to go in the same route and you have to count the chimneys. After 17 days only, after few days only, he was able to come out of that state of depression, because a depression is also a state. What thing has changed actually? This is nothing but a physiology has shifted. Because when you are counting the chimneys, and earlier, have you seen a person who is in depression or in a stuck state? Physiology is like drooling. I'm just doing a generalization, but there are a lot of other things you can calibrate through NLP, that a person in the stuck state or in depression or in anxiety state. But right now my intention is, or John's intention was to change the physiology. और जैसी फिजियोलॉजी चेंज होती है तो रेस्पिरेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और अगर फिजियोलॉजी चेंज होती है तो स्टेट चेंज हो गया, और अनरिसोर्सफुल स्टेट चेंज हो गया। सो अभी अगर कोई अनरिसोर्सफुल सिचुएशन पे है, और थिंक अबाउट इट, मे बी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर, तो चेक इट आउट कि उनका ब्रीदिंग पैटर्न, रिदम क्या है। एक्चुअली ब्रीदिंग का रिदम चेंज हो जाता है। और जनरली जब आप अनरिसोर्सफुल स्टेट्स में होते हो तो आपका जो ब्रीदिंग का रिदम होता है वो रेगुलर होता है। इट्स नॉट योर ओरिजिनल ब्रीदिंग पैटर्न, एंड देयर विल बी टेंशंस इन योर बॉडी। Okay, there will be a lot of tensions in your body also. So that's what you have to do it actually. Unresourceful state जहां भी हो रहा है, first figure it out how this breathing pattern is has been shifted from your normal breathing pattern, where you're feeling pain, where you're feeling sensation, where you're feeling tension in your body. Okay, so kya kare ab? Now coming for the implementation, method one is, if you want to change your state, use some system to create choices in your life. First one, change your breathing pattern. So what you can do when you are in such state, uh, do breathing, right? Rapid reading you can do, or what you can do, inhale through the nose and exhale through the mouth. Do it frequently, like 5 to 7 times. Do it number of times. So automatically this will change the state. And now, right now, I have given you the technology. I have given you the system, how it is changing. So when you are aware about the system, you start believing it actually. And if in the problematic situation, in an unresourceful situation, अगर मान लीजिए अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है और इस ब्रीदिंग पैटर्न के होने से आपका स्टेट चेंज हो जाता है, तो नाउ यू विल स्टार्ट बिलीविंग इट, इट विल बी अ बिलीफ एंड यू विल बी डूइंग इट मोर ऑफन. So now change your breathing pattern. I receive one of the breathing pattern which you can implement it. That's very powerful breathing pattern. I teach it to kids, teenagers, and youth for changing the state. But do it regular way. Do it in a regular way every day. It is like there will be, it's in and study, and then out and then study. So that means 4 seconds I will be inhaling like this. Now 4 seconds I am counting, 4, 3, 2, 1.
It's like steady state, and then 4 seconds I will be releasing. And again, it's a steady state. I'm keeping it neutral. After 4 seconds, again I will be inhaling. 1, 2, 3, 4. Keep it steady. And then exhale. Keep it steady. Okay, this breathing pattern has multiple benefit. I'm not here to give you the advantages of breathing pattern, but when you will implement this breathing pattern, I am curious what benefit you will get it. That's how we say in NLP. It is not about what you say, it is about how you say it. Okay, so आप मुझे खुद बताएंगे कि अगर इस ब्रीदिंग पैटर्न को आप इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या सिचुएशंस आप चेंज कर पाए हो. नेक्स्ट इज चेंज योर बॉडी पॉस्चर्स. सो कई बार हमारे बॉडी पॉस्चर्स हमारे ध्यान में नहीं होते. सो आपको क्या करना है कि एक्सरसाइज के वक्त बॉडी पॉस्चर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. राइट, सेम वे जब भी आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं, आप किसी एग्जामिनेशन में होते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में है, चेक इट आउट बॉडी पॉस्चर. सो अभी देखा कई बार लोग इस तरीके से बॉडी पॉस्चर यूज करते हैं. दे आर अनअवेयर, दे आर थिंकिंग अबाउट इट, एंड उनका पॉस्चर चेंज हो रहा है. So as you become aware about this body posture, what is happening? You will change your state. Okay, you will change your state, and ultimately you know the game now. Change it physiology. That's why when people do exercise, they are so charged up because respiration is changing, state is changing. So कई बार हम लोग है ना, लोग सोचते हैं कि हम थेरेपी करते हैं और चेंज आ गया है. Okay, we are charging a client, but we are doing task to a client based on this chain of excellence. So I have to figure out, मैं कुछ टास्क उसके लिए बनाऊंगा जो उसको 30-45 दिन करना है, और उस टास्क के करते करते ही चेंज हो जाएंगे. ओके, सो या तो रेस्पिरेशन पे काम करना, या फिजियोलॉजी पे काम कीजिए, स्टेट पे काम कीजिए, और परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. दैट्स व्हाट आई से पीक परफॉर्मेंस इन एनएलपी. सो जोक कैन बी स्टेट चेंजर. जोक सुनते हैं, लाफ करते हैं, लाफ्टर थेरेपी. लाफ्टर थेरेपी बहुत पॉपुलर हुई है आजकल, और काफी सालों से लाफ्टर थेरेपी यही काम करती आई है. यू आर डूइंग यूटिलाइजिंग लाफ्टर थेरेपी, रेस्पिरेशन चेंजेस, फिजियोलॉजी चेंजेस, योर स्टेट चेंजेस. सो स्माइल और लाफ्टर जो है वो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी. बॉडी पॉस्चर को इरेक्ट रखें, ओपन बॉडी पॉस्चर रखें हमेशा. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. यू हैव टू थिंक इट अबाउट इट, एंड इम्प्लीमेंटेशन से ही काम बनेगा, और जितना इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उतना लाइफ में रिसोर्सफुलनेस आने वाली है. सो अभी मैं एक फ्रेम सेट कर रहा हूँ, बार बार मैं फ्रेम सेट कर रहा हूँ. फ्रेम का मतलब सिंपल है कि जहां पे मैं अपना फोकस रखना चाहता हूँ, उस कॉन्टेक्स्ट में अपनी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस पे रखना चाहता हूँ. सो पेशेंट सर्जरी से अवेकन हुआ, एंड आई वाज वाचिंग दिस सीरीज गुड डॉक्टर ऑन अमेजन, ब्रिलियंट वेब सीरीज. पेशेंट अवेकन होता है एक सर्जरी के बाद में, और रिकवरी रूम में वेट कर रहा होता है डॉक्टर्स का. सो डॉक्टर विजिट करते हैं, एंड दिस पेशेंट वाज स्ट्रिक्टली इन लाइक स्टिल एस्थेटिक मोड में होता है ना, ऑपरेशन के बाद में ग्रॉगी और एंग्शियस के ऑपरेशन में क्या हुआ. ही वाज वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू इन्फॉर्म व्हाट हैज हैपेंड इन द ऑपरेशन. सो पेशेंट ध्यान से सुनता है, एंड डॉक्टर सेड there is a good news and there is a bad news. So डॉक्टर बोलता ठीक है, the bad news is that the tumor has removed. जो हमने ट्यूमर रिमूव किया वो कैंसरस था. ओके, फेस अब उस दिमाग पे स्टेट चेंज होना शुरू हो गया, फियरफुल होना शुरू हो गया कि बाप रे ये तो कैंसरस आ गया, कैंसर वर्ड आ गया. So surgeon said okay, well, the good news is that we have removed the tumor. Okay, we have removed the tumor as completely as we can. Now the rest up is to you now. And as the doctor said, the rest up is to you now. The patient started figuring out what has happened in the past actually. So in this frame, he was figuring out, due to excessive smoking, what has happened actually. What was the life when he used to smoke it. Okay, he was a chain smoker. Okay, what things have changed in his health actually. So over the time being, he was like, the videos were playing in the mind.
And when the doctor dialogue is again, जैसे कहते हैं ना डॉक्टर की वॉइस आती है, रेस्ट अप इज टू यू नाउ, रेस्ट अप इज टू यू नाउ, मूवीज में ऐसा होता है 3 बार. सो सेम जैसे ही होता था, नाउ this change is bringing something he's evaluating in life also, but now what alternatives are available for him now, what changes he has to make in his lifestyle, what changes he can make so that he can form new beliefs, capabilities, strategies, and he can make his life uh, better and better. So these are the frames now. So first frame is a resourceful frame, and another frame is unresourceful frame. Think about a situation in your life right now, yes, where you are unresourceful. Okay, that can be stuck situation, that can be anxious situation, that can be an unpleasant situation. Think about that. So जैसे ही उसको recall कीजिए पहले, and recall का मतलब है as you are reliving that moment. For example, किसी से conflict हो गया, I'm giving you an example. So if conflict has occurred, you are recalling in your mind, as replaying in the mind, you are seeing, feeling and hearing. Think it as you are reliving the experience. Okay, think it for a while, relive that moment, see, feel and hear. Okay, break the state now. After that first context, break the state. Break the state means that you should come out of that state. So what you can do, take a deep breath. Okay, you can walk, have a sip of water. That's called breaking state. Moving out of any state into a neutral state is called break state. Okay, so then think about another resourceful state. Oh sorry, resourceful state. Now that's the second frame I'm giving you. Now think the moment in your life where you are very resourceful. It can be success, it can be love, it can be confidence, it can be joy, it can be determination, it can be commitment, it can be love, anything. Now see, feel and hear as you are reliving that moment, reliving that experience. See, feel and hear, and come out of that state. Now mark it out. What are the difference in the physiology? What are the difference in the breathing pattern? What are the difference in the posture? So your mind will tell you actually in this moment where you are very full of anxiety and anxious, what is your posture? What is your physiology? What is your gesture? What is your breathing pattern? In the second case, that's a very pleasant experience. What is your physiology? What you are doing? How is your breathing pattern? That's what I'm going to do in this anchoring process. I'm doing here is a contrastive analysis. Contrastive analysis means two different situations, as I presented many times during this webinar. So what you are interested, I think, is do you want to access the resourceful state? सब लोग यही चाहते हैं. कौन नहीं चाहता है कि वो अच्छा फील करे, अच्छा स्टेट एक्वायर ना करे? या कौन नहीं चाहता, उल्टा मैं बोलूं कि कौन नहीं चाहता है कि वो अनवांटेड फीलिंग्स और थॉट में ही रहे? ओके, रादर वी वांट टू रिप्लेस, वी वांट टू गेट रिट आउट ऑफ दैट. ओके, कौन नहीं चाहता है कि अपने इमोशंस के ऊपर गेन ना करे? कंट्रोल इधर आता है, गेन कंट्रोल ओवर योर इमोशंस नाउ. या जब भी कोई इंटेंस चेंजेस होते हैं किसी भी समय पे, तो आप वहां पे अपने जो है काम रखें. जैसे ट्रैफिक लाइट्स, वो बंदे जो जिसको मीटिंग में जाना था, ही वाज नॉट कीपिंग द काम, एंग्शियस, more and more anxious, he was more and more internal dialogue, and then performance shattered हो गई. So positively influence कैसे करें जब triggers होते हैं? Triggers दूसरों से भी मिलते हैं, because you know now about triggers. It can be visual, it can be auditory, it can be kinesthetic, it can be smell, it can be taste also. Or experience the event as we desire. This is what we call state of excellence. No matter what is happening in your life, but what you desire uh, is I'm giving to you in this process. That's what I'm again and again tapping into your inner resources. Okay, so there now I'm coming into a technique. Before that, let me tell you about the break state. Break state is moving out of the state. ये कार के गियर की तरह ही है. जब हम 5वें गियर से न्यूट्रल स्टेट पे आ जाते हैं, ये ब्रेक स्टेट की तरह पर है.
पैटर्न इंटरप्ट दूसरा एक तरह का ही इंटरप्शन है, जो नेगेटिव स्टेट से हम मोर न्यूट्रल स्टेट पे जाते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे घर पे या हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो स्टक स्टेट में हैं। वो स्टक स्टेट में इसलिए है क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी स्टक हो गई है। वो एक ही पोस्चर में रहते हैं, एक ही जेस्चर्स पे रहते हैं, ओके, एक ही जगह पे बैठते हैं वो लोग। दे डू नॉट मूव मच एक्चुअली। इफ यू विल सी दोस पीपल हु आर इन स्टक स्टेट, डिप्रेस पर्सन, पहला उनका चेक यही है कि मूव नाउ, स्टार्ट मूविंग, बिकॉज दे डू नॉट मूव मच। और हम देखेंगे ऐसे लोग अगर स्टक स्टेट में, दे विल सिट और गो इनटू द सेम प्लेस। और इसलिए क्या करना चाहिए? जस्ट चेंज। आपने अगर रामायण में सुना होगा, देयर वाज अ कोप भवन। सो जब भी कोप होता था, दैट्स एन इमोशन, दे गो इनटू दैट स्टेट। तो आपका जो रिसोर्स, आप अगर रिसोर्सफुल नहीं है और कॉन्ट्रा अनरिसोर्सफुल है, तो वो प्लेस भी एंकर्ड कर देते हैं आप। सो व्हेन यू विल वॉक और सिट इनटू दैट प्लेस, दैट इज एंकर्ड, नाउ यू विल एक्वायर द सेम स्टेट। इसलिए कोप भवन में इमोशन वही रहता था, कोप। आपको वो कोप भवन में जाके ही इमोशन एक्सप्रेस करने हैं। अगर एंगर है, ओके, आपको कुछ व्यक्त करना है, गुस्सा, तो उसी में करिए। बट नाउ एज यू आज के समय पे अगर आप सोचिए कि अगर आप जिस बेडरूम में फाइट्स होने लगे हैं, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में, व्हाट कुड बी द सिचुएशन? यू विल बी एंकरिंग द सेम स्टेट, the same bed where you're fighting, same thing which is going on, happening again and again. You are anchoring, you are doing, creating a triggers for you actually. So you have to come out of, you have to interrupt the pattern. That's why this is a powerful tool in NLP called pattern interrupt. So again, few more checks, they will say same things again and again. They will repeat the same things again and again. They will go round and round in the discussions, in an argument. That are some of the checks of stuck state. And what you have to do, you have to interrupt the pattern on yourself, or if it is happening in a family member, उनको हमें चेंज करना पड़ेगा, उत्साहित करना पड़ेगा, राइट? उनको चेंज करने का मीडियम यही है कि either you can change the breathing pattern, change the physiology, okay, and hence you will be changing the state. So इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने आपको ये बार बार बता रहा हूँ, ब्रेक स्टेट करना जरूरी है। जैसे जोक किसी को सुनाते हैं, इट्स अ ब्रेकिंग अ स्टेट। डीप ब्रीदिंग, ब्रेकिंग द स्टेट। वॉकिंग, ब्रेकिंग द स्टेट। डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्शन हम जानबूझ के कर रहे हैं विजुअली। जैसे अगर किसी का ध्यान, देखो देखो ये से देखो, इससे देखो, अब वो दुख में जा रहा था, बट उससे पहले ही मैंने क्लैप कर दिया, उसका ध्यान उसमें जाने नहीं दिया। आई ब्रेक इन द स्टेट एक्चुअली। ब्रोकन कैसे हो गया? क्योंकि मैंने ऑडिटरी यूज किया, या टच यूज कर रहा हूं मैं, या विजुअली यूज कर रहा हूं। दीज आर सम ऑफ द वेज यू कैन ब्रेक द स्टेट। नाउ बैक इनटू द एंकरिंग। सो एंकर का मतलब सिंपल आपको क्लियर हो गया, इट्स अ ट्रिगर एक्चुअली। एनएलपी एंकरिंग जो टेक्निक है, दैट यूजेस अ स्टिमुलस। It can be sound, it can be image, it can be a touch, it can be smell, taste, to trigger a consistent response in you or in someone else. और why it is happening, again and again आप समझ जाइए, एसोसिएशन से काम बनता है। You learn by making links and association. And when something is anchored, we unconsciously attach an emotion as well as our behavior to that sound, image, touch, smell, or taste. Or it remains an opportunity for you also, because you can carry out anchoring for resourcefulness. So here I am teaching you a method called anchoring, and that is from my manual only. This is a very powerful technique which I will be giving you right now. So मैं एक बार chat box पे देख लूँ, is there any question? No question here. Okay. सो नाउ फॉर यू, ऑल ऑफ यू, हो सकता है ये लोग बाद में वीडियो देखेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो लाइव हो रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आगे जाके भी 5 साल बाद अगर कोई ये वीडियो देख रहा होगा, तो इट्स इन द रेसिपी फॉर्म, दे कैन सी इट एंड दे कैन इम्प्लीमेंट इट। And just listen to me. This is about write down the state where you would like to generate in yourself the following situation. मान लो कुछ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट मैंने लिए हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर एन एग्जामिनेशन, आपका करंट स्टेट क्या होता है, डिजायर्ड स्टेट क्या चाहिए? इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपका करंट स्टेट क्या है, डिजायर्ड स्टेट क्या चाहिए? इफ यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन,
करंट स्टेट क्या है, डिजायर्ड स्टेट। पब्लिक स्पीकिंग, राइट, जैसे मैंने म्यूजिशियन का एग्जाम्पल दिया, सेम पब्लिक स्पीकिंग का भी एग्जाम्पल है। लोग डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग से। मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने इंजीनियरिंग तक कभी पब्लिक स्पीकिंग नहीं किया। दैट्स व्हाट आई एम वेरी थैंकफुल टू एनएलपी ओनली। I was able to utilize the resources, and with like boom, every day I'm gaining something, I'm achieving something, I'm on the excellence way. So same way, public speaking, गिविंग फीडबैक, while you are giving feedback, एक पति पत्नी को फीडबैक देता है, एवरीथिंग इज अ फीडबैक हियर, इट्स अ फीडबैक गेम गोइंग ऑन। while you are doing exercise, while you are dealing with aggression, while you are doing parenting, while you are dealing sales, so these are very specific context I have taken। आपको क्या करना है, आपका करंट स्टेट क्या है और डिजायर्ड स्टेट क्या है, और इतनी एग्जाम्पल से अभी आपको क्लियर हो गया होगा। आई हैड गिवन यू द फ्रेम्स नाउ, अनरिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल। ओके, म्यूजिशियन वाला, जब हम सर्जन ने ऑपरेट किया पेशेंट, ओके, एंड देयर वर टू सिचुएशंस, एन एम्प्लॉय जिसको डील क्रैक करनी थी। सो ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्कस इन दैट फॉर्म ओनली, इन दैट फ्रेम, करंट स्टेट, डिजायर्ड स्टेट। So the first process is select a problem situation where you would like to behave more resourcefully. Okay, so take a context where you would like to behave more resourcefully. What is the event that tells you actually what you are in that type of situation? किस situation पे आप फंसे हुए? Take an example, जैसे एग्जाम में कोई बच्चा जा रहा है, किस situation पे है वो? So a child can feel कि वो एक उसको palpitations हो रहे हैं, या जिसे बोलते हैं butterflies हो रही है, that's a somatic thing happening, feeling based हो रही है। So कुछ भी प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकती है आपको। अगर आपकी अपनी सिचुएशन है, थिंक अबाउट इट, स्टेप इनटू दैट सिचुएशन नाउ, एज इफ, फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सो स्टेप इनटू दैट सिचुएशन, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में बार बार आपको परेशान कर रहा है। तो प्रॉब्लम सिचुएशन को लीजिए एंड देन थिंक अबाउट इट, व्हाट इज हैपनिंग, फोकस ऑन योर फिजियोलॉजी, व्हाट इज हैपनिंग, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। नाउ स्टेप आउट ऑफ दैट सिचुएशन। अब रिसोर्स को चूज करना पड़ेगा। सो क्या डिजायर्ड स्टेट चाहिए, और डिजायर्ड स्टेट के लिए स्पेसिफिक रिसोर्स चाहिए होगा आपको। जैसे मैंने बोला एग्जामिनेशन, तो मैंने बच्चों से पूछा कि ओके, चलो अगर मैं इसको हटा देता हूँ करंट स्टेट जो आपका, अगर पाल्पिटेशंस है, यू आर फीलिंग एंग्शियस, व्हाट यू डिजायर, देन टेल मी व्हाट कुड बी द बेस्ट सिनेरियो वेयर यू कैन गिव योर एग्जामिनेशन, व्हाट you can require. So child can say confidence, right? Child can say focus, child can say calmness. So these are resources, it can be anything, just choose your resources। परसिवरेंस हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, करेज हो सकता है किसी के लिए, ह्यूमर हो सकता है किसी के लिए, फन हो सकता है, जॉय हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वॉट एवर इज मोस्ट यूजफुल फॉर यू, जस्ट टेक इट। ओके, सो एक रिसोर्स को ले लीजिए। नाउ एलिसिट, ये टेक्निकल वर्ड है, एलिसिट द स्टेट। एलिसिट का मतलब है कि आप उस स्टेट में जा रहे हो, और स्टेट में जाने के लिए आप क्या करोगे, जब आपको पता है कि आप कभी लाइफ टाइम में यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, समथिंग हैज हैपेंड वेयर यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपने कॉन्फिडेंट को रिसोर्स लिया है तो थिंक अबाउट एनीथिंग वेयर यू आर वेरी काम। So recall that event from your life as you are reliving right now. So see, feel and hear, और देखिए, सुनिए, फील कीजिए, और play the entire clip, play the entire movie as you are reliving that experience. Give me a moment, please. One moment. I have to plug in the charger. Okay. Okay, I'm back. So now you are thinking of a resource. So when you are playing that movie, what you are doing, what it is like when you feel like that, आप किधर, कैसे आपको पता है कि आप उस कॉन्फिडेंस वाले स्टेट में हो, कैसे आपको पता है कि आप एंशियस वाले स्टेट में हो, आपकी वॉइस, कैसे आपको पता है कि आप क्या देख रहे हैं? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, वन मोमेंट। अभी ठीक है?
ओके, सो नाउ चेक इट आउट कि जब आप उस स्टेट पे जाते हो तो आपको कैसे पता लगता है कि आप कैसे फील कर रहे हो कॉन्फिडेंस। चेक इट आउट। और कौन कब उस टाइम पे आप जाते हो जहां वो आपका पीक स्टेट होता है, यानी कि यू आर फीलिंग यस कॉन्फिडेंट इन योर बॉडी। व्हाट डिड यू सी, व्हाट डिड यू फील, व्हाट यू हेयर। Okay, and then every moment you have to break the state, come out of that state. Now the next step is to choose the anchor. Right now I am teaching you an anchor which is a tactile anchoring. Like tactile का मतलब एक touch, तो आप अपने knuckles को choose कर सकते हैं. Knuckles are easy to remember and you can put the anchor here. Okay, we will fire the anchor here. Now I want you to choose an anchor, for example maybe on the knuckle, any knuckle which is easy to remember, easy to play with. अब हमें फिर से उस इवेंट में जाना है, रिसोर्सफुल मेमोरी में, एंड देन फील द रिसोर्सफुल स्टेट वंस अगेन, सी फील एंड हेयर. And those who are doing it, I am take it sometime, I am playing for you. Okay, see, feel and hear, recall that event, be in that situation. Okay, be in that situation, see, feel and hear. And when you are at the verge of that higher state, we are feeling confident or resourceful in any situation, near its peak, fire the anchor now. So fire the anchor on the knuckle. Like this, fire the anchor. And once it is done, yes, come out of that state now. Break the state. Break the state. So when I say break the state, take a deep breath. Okay, clap, shake it off, have a sip of water, or take a walk. And now, after coming from that state, just once again fire the anchor. And when you will fire the anchor, just check it what it is coming. Now, is it the same feeling you are feeling when you were like confident or resourceful, right? You have to check it out. How, what did you see, what did you feel, what did you hear? So that's an anchor. Actually, it will work for you whenever you desire that resourcefulness for you. So this is a very powerful technique. Again, I had given you a lot of techniques. If you will rewind this webinar, you will come to know that almost 5 to 6 techniques I have given you about the frames, about the mapping, about the anchoring, break state, pattern interrupt, the chain of excellence, right? So let me check it out. What? Yeah. Yes. So yes, we have राइट नाउ जो आपने अभी टैपिंग के बारे में हमें बताया, नकल्स पे वो करके anchoring. जो Yes. अभी हमें फायर करना था, Yes. दैट वाज अ वंडरफुल एंड कुछ अभी चल रहा था, अभी किसी हमारे फैमिली में एक बच्चे का किसी से कार एक्सीडेंट हुआ और मेरे दिमाग में वही स्टेट ऑफ माइंड चल रहा था, एंड जैसा है वैसा यू नो आई वाज एबल टू कनेक्ट विद ऑल द टेक्निक्स दैट यू गेव राइट नाउ. तो उसमें जब ये था कि ठीक है स्विच ऑन कैसे करना है वाला किया, तो तुरंत काम डाउन हो गए. अभी जैसे ही टैपिंग किया तुरंत वो चीज मेरे दिमाग से निकल गई. तो इट्स सच अ वंडरफुल थिंग कि हम कोई भी सिचुएशन में है तो सिचुएशन से इमीडिएट हम कैसे बाहर आ सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमें योगेश जी से जानने को मिला. सर आप ऑडियंस को वो जब आप पीपीटी चल रहा था तो आई थिंक ऑडियंस वाज नॉट एबल टू सी यू वेरी वेल. आप 2-3 चीजें उन लोगों को लाइव बता दीजिए कैसे वो कर सकते हैं. जैसे ब्रीदिंग का था, जैसे फोर फोर यू नो ब्रीदिंग, देन स्टेबल, देन अगेन लो ब्रीदिंग, देन स्टेबल. Yes, there are a lot of techniques we have covered, like resourceful, unresourceful. State is what is your choice. So आप डायरेक्ट एंकर को सेट कर सकते हैं और किसी रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लेजेंट अनप्लेजेंट. सो वेन एवर यू रिक्वायर लाइक दैट प्लेजेंट थिंग टू अकर, जैसे एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, तो यू हैव टू फायर दैट एंकर. एंड एज यू विल फायर द एंकर यू विल बी एक्सेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, and you will be feeling resourceful, confident.
Now, what you can do there are lot many methods you can play up with. What I taught you or I'd given you the techniques are anchoring techniques, precisely a chain of excellence technique, what I have learned from John Gitter. So you can play up with your breathing pattern, like 4 second you're inhaling, steady, 4 seconds exhale, and then steady, and the same process. You can change your breathing pattern. Okay, so whenever you are in stuck state, ultimately we have to do is the change the state. Always remember there is a choice. Okay, state choice will give you state excellence. So that is actually choice is better than no choice. Okay, and about the frames, what you want to focus. See, कहते हैं ना वो पूरी कायनात कुछ ऐसा डायलॉग है कि आप अगर किसकी तरफ फोकस करते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको दिखाने में. अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी जी. कायनात उसे निभाने के लिए आपके साथ लग जाती है. Yes, so I say it actually what you focus brings you. आपका फोकस जहाँ पे है वही चीज आपको दिखेगी भी. थिंक अबाउट के आपने सोच लिया एक दिन कि मुझे मर्सिडीज लाल कलर की गाड़ी देखनी है. The thinking as you are processing that information, ultimately within like 2 3 days, every time you are walking on the road or you are riding, you will see those red Mercedes car only. Here also the same, I'm just giving you a metaphor, but what you assign meaning to yourself, either you want to focus on resourcefulness or you want to focus on that stuck state only. Choice is there. I say a choice is always there. So with this, now I think all the tools I have given you, and let me check it out if any tool is left for you. Okay, so you can play with these anchor techniques, and you can play with n number of anchors. Ultimately, it's a neurocircuit we are forming, and I don't want you to ring the bell again and again. Once a neurology is formed, that will not require again to play with those anchors. Task accomplished हो गया है, और वो न्यूरोलॉजी अपना आप काम करते हैं, न्यूरो सर्किट्स अपना आप काम करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स अपना आप काम करते हैं. ओके, so thank you so much. Thank you so much for showing me the opportunity for you in this way, so that मेरा काम ही है, जैसे मैंने बोला कि ट्रांसफॉर्म करना लोगों को, और इसी वे में मैं आगे भी अगर मौका मिलता है तो आई विल ब्रिंग अप मोर एंड मोर presentations for you, more and more training programs for you, so that you can transform yourself as well as others. Thank you so much. So much, Yogeshi, for giving such a valuable time and valuable knowledge. आपके द्वारा दिए गए बहुत सारे टेक्निक आई रियली फील कि इट विल रियली ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक, बहुत छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, और ये हर कोई इसे इमीडिएट अपने मनोभाव को एकदम से काम डाउन कर सकता है. दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज नहीं समझ पाए हैं, दोबारा से इस वीडियो को आप देख सकते हैं. ये ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव रहेगा, आप आराम से देखें उसको वापस से किसी के द्वारा, प्लस जो योगेश जी द्वारा जो उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से समझाया है, वो समझना बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है. तो आप इसे आराम से कनेक्टिविटी अपना बना पाएंगे. एनएलपी के इंटरनेशनल मास्टर हैं, और इन्होंने बहुत अच्छे से, मतलब कि अगर आप कोई भी सिचुएशन में है, व्हाट इज स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि आपका मन अभी किस तरह से कार्य कर रहा है, कैसा वो बिहेव कर रहा है, किस स्थिति में है, तो वो चॉइस है आपकी कि क्या आप उस सिचुएशन में रहना चाहते हैं या उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं. और दोस्तों, हर कोई अच्छी सिचुएशन में ही रहना पसंद करता है, तो वो अच्छी सिचुएशन में आप कैसे आएंगे. तो ये चीज एक छोटे जैसे कि ब्रीदिंग, अभी हम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं या नेगेटिविटी में होते हैं, तो हमारी सांसें ऑटोमेटिकली बहुत भारी चलती हैं, हमें बहुत धड़कन जैसा महसूस होता है, हम इजीली वॉक नहीं कर पाते, सो नहीं पाते. तो आप तुरंत क्या करेंगे. उन्होंने एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चे को ये पूछने के लिए कि जाके दादाजी से पूछो कि आपकी तबीयत कैसी है, और बाद में बताया कि आप बचपन में क्या करते थे. जैसे ही उन्होंने पूछा कि बचपन में, तो वो अपना दर्द वर्द सब भूल गए थे, एंड द दादाजी वाज वेरी हैप्पी. इन द सेम वे, यू जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट द हैप्पी मोमेंट, कि अगर ये
या इवन चोट भी लगती थी ना, इवन चोट भी हाँ लगती थी तो बचपन में चाइल्ड, उसको कोई टास्क डिले नहीं करना होता, उसको खेलने के लिए चोट लगी ना फिर भी चला जाएगा, दैट्स हाउ चाइल्ड प्लेज इट। बिल्कुल। ये इतना तरीके से मतलब बताया कि आपका माइंड, बोलते मम्मी ने बोला यही है बेटा एनएलपी, कैसे अपने 1 सेकेंड में अपने माइंड को चेंज कर दिया। आप देखेंगे इन्होंने बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है हमें कि एक बंदा है, वो अगर लेट पहुंचा है ऑफिस और हमेशा उसको मतलब सुबह उठा, बारिश है, मूड ऑफ हो गया, एंड उससे उसकी दिन की शुरुआत हुई और एंड तक सब कुछ नेगेटिव 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 ही होता गया। तो वो क्या था कि उसकी बोलते ना किसका मुंह देखकर उठे थे, ऐसी एक कहावत है। तो इट इज ऑल अबाउट कि आप अपने माइंड में किस थॉट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इफ यू स्टार्ट विद अ पॉजिटिव थिंकिंग, योर डे एंड्स विद अ पॉजिटिव थिंकिंग। इफ यू स्टार्ट विद अ नेगेटिव थॉट, योर डे एंड्स विद अ नेगेटिव। It's all about you yourself. You are the creator. आपका मन है, आपका विचार है, आपका दिन है, आपकी दुनिया है, और इसके निर्माता भी स्वयं आप ही हैं। एनएलपी आपको यही चीज बताता है। दोस्तों, मैंने भी 2015 में एनएलपी का सेशन किया था, जैक मकानी तुम जो मनी, एंड उसके बाद बहुत कुछ जाना कि अरे ये चीजें तो हम, कुछ कुछ चीजें तो हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से हमेशा से सीखते आए कि काम डाउन रहना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, बिहेवियर कैसे चेंज करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी चीजें सीखने के लिए उस समय हमें हजारों रुपए, 60,000 का कोर्स मैंने देके पे करके सीखा। आज हमें मास्टर्स कितने आसानी से आप सभी को ये नॉलेज देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। आपको ये एक काइंड ऑफ मिनी वर्कशॉप के द्वारा लाइफ चेंजिंग करने के लिए वो अपना समय दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप स्वयं जान सके व्हाट इज लाइफ, how can you make your life better. This platform is being created to spread the awareness about the truth and light. जो हो रहा है, जो मास्टर्स भी हमारे साथ मिलकर हेल्प कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपके द्वारा अगर कोई भी क्वेरीज है, प्लीज फील फ्री टू राइट द इन द कमेंट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीवेयर यू कैन जस्ट राइट द हीलिंग हैंड्स, आपको बिल्कुल वो पेज मिल जाएगा। एंड जो भी टॉपिक से रिलेटेड अगर उस मास्टर से आप कोई भी तरह से कनेक्टिविटी चाहते हैं, वर्कशॉप्स चाहते हैं, वी विल हेल्प यू डेफिनेटली। आप इसको जरूर अपने जीवन में अपनाइए, हमेशा हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। योगेश जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ, थैंक यू सो मच, प्लेजर इज ऑल माइन। So थैंक यू। great wishes to all of you, and I hope these techniques will transform your life. With that note, I lot of blessings to you, and I hope you will practice it. Thank you so much. डेफिनेटली। एंड व्यूअर्स, हमारा ये प्रोग्राम 21 नवंबर तक रहेगा। तो आज हमारा 6th डे है। एवरी डे फ्रॉम 6 p.m. वी आर स्टार्टिंग दिस लाइव शो with different topics which will really transform your life like anything. So stay connected. Thank you all. Thank you.